Okay, so till now we have discussed the concept of sequence, that what is a sequence? It's just an arrangement of numbers which has a definite pattern. Now, for example, if I talk about a sequence, let us say a sequence is 2, 20, 200, 2000 and so on. Now, this is a sequence, you know this very well because you can see a definite pattern in this sequence. Now, what exactly is the pattern in this sequence? You can see that the first term of this sequence is 2. The second term of this sequence is 20. So, there is a relation between this first term and the second term, and the relation is that if I multiply this first term with 10, I will get 20. Okay? If I multiply this 10 into this term, I will get 20. Similarly, if I multiply 10 in this 20, I will get next term, that is 200. Again you can see, if I multiply 10 in this 200, I will get 2000. So what will be the next term after 2000? Yes, it's simple. How? You can see that every other term is obtained by multiplying 10. Every other term is obtained by multiplying 10 to the previous term. Here I have multiplied 10 to 200 to obtain 2000. Here I multiplied 10 to 20 to obtain 200. So what will be the next term, what will be the next number after 2000? Again what I will do, I will simply multiply this 2000 by 10 and I will get this term, 20,000. So the pattern in this term helped me to predict the next term. Okay. So this is a kind of sequence which has some definite pattern, that every other term is multiplied by 10 times more than the previous term. Okay. Now this is one of the example of sequence. Second type of sequence, if I have a sequence, let us say 15, 17, 19, 21, 23, 25 and so on. Now this is again a sequence. Why? Because there is a definite pattern in this sequence. What will be the pattern that we need to determine? इसमें pattern क्या बन रहा है? You can see that the first term is 15, second term is 17. If you can observe, if I add 2 to this first term, अगर मैं इस 15 में 2 add करता हूँ, so I will get 17. This will be 17. If I add 2 in this 17, I will get 19. If I add 2 in this 19, I will get 21. If I add 2 into this 21, I will get 23. If I add 2 in 23, I will get 25. So what will be the next term after 25? What will be the number after 25? It's very easy. You can see that every next term, every other term is 2 more than the previous term. What you can see? Every next term is 2 more than previous term. Okay? It's 2 more than previous term. So just by looking at this pattern, observing this pattern, I can say after 25 definitely the next term will be 2 more than this 25. So I will simply do an exercise that I will add 2 arithmetic operation, that I will add 2 to this 25 and I will get 27. So the next term in this sequence is 27. What will be the next term after 27? If I want to determine the next number, the next term of this arrangement of the sequence after 27,
What I will do? Again I will follow the same pattern. The pattern is every next term is 2 more than the previous term. So simply I will add 2 to this 27 to obtain next term, that is 29. Can I obtain one more term after 29? Yes. Again I will follow the same pattern. I will add 2 to this 29 and I will get 31. After 31 again 2, after 33 again 2, after 35 again 2, and so on. The sequence will continue till infinity. Okay, because you can see every time I am adding 2, I will get the next number. I am getting another odd number. This is 29, then 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49 and so on. ये sequence चलता जाएगा. Okay, so you can see this is also a sequence, this is also a sequence, but there is a difference between these two sequences. The difference between these two sequences is that here every next term is 2 more than the previous term, but in this sequence every next term is 10 times the previous term. Okay, so both are sequence, but the pattern in both the sequence is different. Here I am multiplying 10 again and again, but here I am adding 2 again and again. So this kind of sequence in which I have multiplied 10 again and again, this kind of sequence is known as geometric progressions. Okay, this kind of sequence is known as geometric progressions, and the second sequence in which I am adding 2 again and again, this sequence is known as arithmetic progressions. Okay, the second kind of sequence is known as arithmetic progression. So what are the properties, what you can observe for this arithmetic progression? You can see there is a pattern that every next term is 2 more than the previous term. Okay, this is a pattern. So what if I subtract a next term with the previous term? For example, if I ask you what is the difference between 19 and 17? If I subtract 19 and 17, the difference between 19 and 17 is 2. What if I subtract 17 and 15? 17 minus 15, it will again be 2. What if I subtract 21 and 19? It will again be 2. 23 minus 21, it will again be 2. What is 29 minus 27? It will again be 2. So what you can see is that the difference of next term minus previous term, that is difference of next term and the previous term. Next term is, if this 25 is next term, I will say 23 is the previous to 25. If 23 is next term, 21 is the previous term. Okay, so you can observe that next term minus previous term is a constant. Now this is the most important thing. I can observe that the difference between the next term and the previous term is a constant. It is always constant. This is constant. This is constant. Okay, so what is the definition, what is the observation for this arithmetic progression? I will say an arithmetic progression is a sequence of numbers in which the difference between two consecutive terms is constant. What I can say,
An arithmetic progression is a sequence in which the difference between two consecutive terms is always constant, that is next term minus previous term is a constant. Okay, next term minus previous term is a constant. This is the definition of an arithmetic progression. It's just a sequence, and it's a special kind of sequence in which the difference of the two consecutive terms is always constant. So if I want to check whether a sequence is an arithmetic progression or not, or whether an arrangement of numbers is sequence or not, what I need to do? Let us take some example. If I write 15, or let us say take some another number, let us say 9, then 16, then 23, then 30, then 37, then 44, and so on. Now, can I check whether this sequence, whether this arrangement of numbers is an arithmetic progression or not? Yes, we can check it very easily. Why? Because I have seen in this situation that the difference between the two terms, difference between any two consecutive terms is always constant. This is the definition of an arithmetic progression. Now, what is the difference between 16 and 9? If you subtract 16 and 9, the difference is 7. What is the difference between 23 and 16? The difference is 7. What is the difference between 30 and 23? It is again 7. The difference between 37 and 30? It is again 7. And difference between 44 and 37? It is again 7. So what I can observe is that 16 is obtained by adding 7 to this 9. 23 is obtained by adding 7 to this 16. Then again I have added 7. Then again it is 7. Then again it is 7. So 7 is what? 7 is a difference which is common in all the consecutive terms, all the pairs of consecutive terms. You can see 7 is a common term. It's a common value that is obtained by subtracting any two consecutive terms. If I subtract 16 and 9, again 7, 23, 16, 7, 30, 23, again 7, and so on. So what I am going to say is that this 7 which is obtained by subtracting the two consecutive terms, this 7 is, since it's a constant term, I will say 7 is known as common difference. Okay, this 7 is basically the common difference. Common difference means I am subtracting any two consecutive terms and I am obtaining a common, a fixed difference. This difference is fixed in all the consecutive terms. So this is basically the definition of an arithmetic progression. This is the kind of arithmetic progression. Now, coming to the geometric progression, this geometric progression is not in our course, so we need not to discuss this concept. So first you note this, then we will discuss about arithmetic progressions in more detail. Okay, so हमने basic arithmetic progression का मतलब क्या होता है उसे समझा. Now let us understand this concept in more detail. If I write the definition of an arithmetic progression, an arithmetic progression or AP is a sequence of numbers in which first term is given and
every other term is obtained by adding a fixed number to the previous term. To the previous term, and this fixed number which is added to every previous term to obtain the next term, this fixed number is also known as common difference. This fixed number is also known as common difference. Okay. So अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? यह एक नंबर्स का सीक्वेंस है. ओके, नंबर्स की एक सीक्वेंस है. इस सीक्वेंस में एक पैटर्न है. कैसा पैटर्न है? इस सीक्वेंस में यह पैटर्न है दैट फर्स्ट टर्म, इस सीक्वेंस का पहला टर्म, पहला नंबर हमें गिवन होगा और उसके बाद हर अगला टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू द प्रीवियस टर्म. हर पहले टर्म को कुछ फिक्स नंबर उसमें ऐड करेंगे, सो यू विल ऑब्टेन द नेक्स्ट टर्म. लेट अस अंडरस्टैंड इट बाय एन एग्जांपल. इफ आई हैव अ सीक्वेंस लाइक दिस, if I have a sequence like this, okay, and I want to check whether this sequence is an arithmetic progression or not. तो अभी हमने क्या कहा था? arithmetic progression क्या है? An arithmetic progression is the sequence in which next term minus previous term is a constant. हमने अभी देखा था एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक वह सीक्वेंस है जिसमें नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म यह हमेशा एक कांस्टेंट होगा. लेट अस चेक दिस सीक्वेंस. इफ आई सब्ट्रैक्ट 13 and 3, I will subtract 3 from 13, you will obtain 10. If I subtract 23 and 13, I will again obtain 10. If I subtract 33 and 23, I will obtain 10. If I subtract 33 from 43, I will again obtain 10. And if I subtract 43 from 53, I will again obtain 10. So what you can see is the difference between the two consecutive terms of this sequence is a constant, and that constant is 10. This 10. You can see here it is also 10, it is also 10, and this is also 10. So क्योंकि इस सीक्वेंस में हर दो consecutive terms का difference constant है, तो इसीलिए मैं कहूंगा कि this sequence is an arithmetic progression. Okay, this is one way to represent, one way to define an arithmetic progression. The other way to define is, you can see this definition कि एक first term given होगा और हर अगला term obtain करने के लिए you need to add a fixed number to the previous term. Now then I have said that fixed number is the common difference. Now how this common difference is obtained? This common difference is, you can see I am subtracting the two consecutive term, the difference between these two term is 10, this difference between these two term is also 10, difference between these two term is 10, so the difference between any two consecutive terms is 10, so I will say 10 is a common difference. Okay, 10 क्या है? 10 एक common difference है हर दो consecutive terms के बीच में. For this sequence I will say 10 is common difference. Okay, 10 क्या है? 10 है common difference. So इस AP में, इस arithmetic progression में हो क्या रहा है? In this arithmetic progression you can see this 3
इज द फर्स्ट टर्म। 3 क्या है? 3 इज फर्स्ट टर्म, 3 को हम बोलेंगे फर्स्ट टर्म, और 10 इज कॉमन डिफरेंस। 10 क्या है? कॉमन डिफरेंस, 3 क्या है? फर्स्ट टर्म। सो इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हमें पहला टर्म 3 मिल गया। अब 3 के बाद अगला टर्म ऑब्टेन करने के लिए क्या लिखा है? वी नीड टू ऐड, एंड इज गिवन, एंड दिस ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू द प्रीवियस टर्म। तो 3 के बाद अगला टर्म ऑब्टेन करने के लिए 3 में हम कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देंगे। इसका मतलब इस 3 में अगर मैं 10 ऐड कर दूं, so I will obtain the next term. The next term is 13. What if I want to obtain the term after 13? 13 के बाद अगला term अगर obtain करना है, so what the definition says? By adding a fixed number to the previous term. So यहां पर जो भी term आएगा उसके लिए previous term कौन सा है? यहां पर आने वाले term के लिए 13 previous term है। तो इसका मतलब I need to add 10 to this 13, okay, to obtain the next term, that is 23. If I want to obtain one more term after 23, I will add 10 to this 23 and I will get 33. After 33, again simply add 10 to obtain 43. Then after 43, again simply add 10 to obtain 53. And then what after 53? If I want to write one more term after 53, one more number after 53, what I need to do? As I have seen that this sequence has a pattern. The pattern is every next term is 10 more than previous term. Okay, so I will simply add 10 to this 53 to obtain the next term, and the next term will be 63. Okay, the next term will be 63. So if 3 is the first term and 10 is the common difference, I can write this arithmetic progression. मतलब इस arithmetic progression को लिखने के लिए, इसको जानने के लिए क्या मुझे इतने सारे टर्म्स की जरूरत थी? नहीं। अगर मुझे इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सिर्फ फर्स्ट टर्म पता होता और कॉमन डिफरेंस पता होता तो मैं पूरा सीक्वेंस, पूरा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लिख सकता हूं। 63 के बाद अगला टर्म भी लिख सकता हूं, उसका अगला, और ऐसा अप टू इंफिनिटी मैं सारे टर्म्स इस सीक्वेंस के, इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिख सकता हूं। ओके, सो देयर इज अ इंपॉर्टेंस ऑफ दिस फर्स्ट टर्म एंड दिस कॉमन डिफरेंस। अब क्योंकि फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम इन्हें कुछ अल्फाबेट्स से रिप्रेजेंट करेंगे, इनके लिए कुछ रिप्रेजेंटेशन बनाएंगे। सो फर्स्ट टर्म के लिए रिप्रेजेंटेशन है ए। फर्स्ट टर्म को हम हमेशा स्मॉल ए से डिनोट करेंगे और स्मॉल टी। ओके, ए या टी कुछ भी चलेगा, इन whichever the alphabet you are more comfortable, choose that। आप चाहते हैं कि ए से ही लिखना है, हम फर्स्ट टर्म को ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ए से ही कीजिए, टी से चाहते हैं तो टी से कीजिए, बट दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। अगर आप एक सिंगल रिप्रेजेंटेशन लेके चलेंगे सो यू विल नेवर गेट कंफ्यूज इन क्वेश्चंस। अदरवाइज क्या होगा, आपने कहीं पे ए लिया कहीं पे टी लिया, इससे कंफ्यूजन क्रिएट होता है। अगर क्वेश्चन में गिवन है देन इट इज अदर थिंग, लेकिन आपको अपना माइंडसेट बनाना है कि आप हमेशा फर्स्ट टर्म को ए से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं या टी से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। ओके, सम बुक सेज कि ए और टी दोनों चलते हैं, दोनों यूज कीजिए, ऐसा नहीं है। दोनों यूज करेंगे सो यू माइट गेट कंफ्यूज, इसीलिए फोकस ऑन ओनली वन रिप्रेजेंटेशन। नाउ फर्स्ट टर्म को हम हमेशा स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करेंगे या फिर स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरह से अगर मैं कॉमन डिफरेंस की बात करूं, सो कॉमन डिफरेंस को हम हमेशा स्मॉल डी से ही रिप्रेजेंट करेंगे। कॉमन डिफरेंस क्या है, हमेशा स्मॉल डी से ही रिप्रेजेंट होगा। सो अगर मुझे किसी
अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म पता है और कॉमन डिफरेंस पता है, तो क्या मैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लिख सकता हूं? यस, आई कैन राइट द कंप्लीट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. कैसे? फॉर एग्जाम्पल, इफ A is the first term and D is the common difference, then the arithmetic progression is, then arithmetic progression will be, कैसे लिखेंगे? हमने देखा इस सीक्वेंस में, इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में फर्स्ट टर्म 3 था, तो सबसे पहले हमने 3 को लिख दिया बिकॉज 3 से ये सीक्वेंस स्टार्ट हो रही है. तो यहां पर a फर्स्ट टर्म है, तो इसीलिए इस सीक्वेंस के लिए मैं a को लिख दूंगा बिकॉज a इज द फर्स्ट टर्म. नाउ इफ आई वांट टू ऑब्टेन द नेक्स्ट टर्म, हाउ आई हैव ऑब्टेन्ड द नेक्स्ट टर्म इन दिस सीक्वेंस? मैंने फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड करा और नेक्स्ट टर्म मिल गया. यहां पर फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड करना है. कॉमन डिफरेंस क्या है? ये d. d इज द कॉमन डिफरेंस. इसका मतलब मैं इस a में कॉमन डिफरेंस को ऐड करूंगा d, सो आई विल ऑब्टेन द नेक्स्ट टर्म a प्लस d. ओके, आफ्टर दैट दिस इज द सेकेंड टर्म. इफ आई वॉन्ट टू ऑब्टेन थर्ड टर्म, थर्ड टर्म कैसे ऑब्टेन हुई? यू कैन सी सेकेंड टर्म में कॉमन डिफरेंस जोड़ा गया तब थर्ड टर्म मिल गई. इसका मतलब सेकेंड टर्म में कॉमन डिफरेंस जोड़ देंगे तो थर्ड टर्म मिल जाएगा. सो यहां पर भी मैंने d को जोड़ दिया, सो यू विल गेट a प्लस 2d. फिर फोर्थ टर्म ऑब्टेन करने के लिए थर्ड टर्म में d को जोड़ा. ओके, थर्ड टर्म में d को जोड़ा तो फोर्थ टर्म मिल गया. फिफ्थ टर्म ऑब्टेन करने के लिए फोर्थ टर्म में d को जोड़ा, तो यहां पर थर्ड टर्म इज a प्लस 2d. इसमें क्या जोड़ूंगा? d, कॉमन डिफरेंस, तो आई विल ऑब्टेन फोर्थ टर्म. सो इफ यू ऐड if you add d to this third term, you will obtain a plus 3d. Then after this a plus 3d, again you will add d to obtain a plus 4d and so on. So this is the general representation of an arithmetic progression whose first term is a and common difference is d. Now talking about this d and this a can be any number. a कोई भी नंबर हो सकता है, whether positive, whether negative, whether perfect square, whether irrational number, whether fraction, whole number, integer, कुछ भी हो सकता है. d की बात करें, सो d कैन ऑल्सो बी एनी रियल नंबर. उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि d रैशनल है, इरेशनल है, नेचुरल है, होल नंबर है, इंटीजर है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, जीरो है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ओके, सो द सिंपल explanation of a and d can be any real number. Okay, a and d can be any real number. वैसे when you go in class 11th you will understand there are imaginary numbers also, and those imaginary numbers can also form an arithmetic progression, but our discussion will only be up to real numbers. हम सिर्फ real numbers को ही सीख रहे हैं, उन्हें ही पढ़ रहे हैं, इसीलिए हमें मानना है कि a और d हमेशा real number होंगे. रियल में कुछ भी हो सकता है, फ्रैक्शन, डेसिमल, नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो, इरेशनल, रेशनल, कुछ भी. ओके, सो दिस इज द जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. नाउ लेट अस से आई हैव फ्यू एग्जांपल्स. If I write a sequence, if I write an arrangement, let us say like this: 3, 3, 3, 3, 3, 3, and so on. Now, this is an arrangement of numbers 3, 3, 3, 3, 3. I want to check whether this is an arithmetic progression or not. क्या लगता है, क्या ये arithmetic progression है कि नहीं है? Let us check this. कैसे चेक करेंगे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं? हम सिंपल यूज करेंगे इस कॉन्सेप्ट को. नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म इज अ कांस्टेंट.
ये चीज को हम चेक करेंगे. So let us check this apply this equation, apply this condition in this arrangement. Next term 3, previous term 3. So next term minus first term. So 3 minus 3 is equals to 0. Then again this is next, this is next. This is previous, this is next. So 3 minus 3 again 0. Then this term and this term. So 3 minus 3 again 0. This term and this term. 3 minus 3 again 0. This term and this term. 3 minus 3 again 0. So what is the common difference in this arrangement? इस arrangement में common difference क्या दिख रहा है? हम ये देख रहे हैं कि every next term is 0 more than previous term. Okay, every next term is 0 more than previous term. 0 means nothing, so every next term is equal to previous term. So first term 3 था, तो next term क्या है 3, because next term is 0 more than previous term. So simply I have added 0 to this number and I have obtained 3. Similarly again I have added 0 to obtain 3, then again I have added 0, then again I have added 0, then again 0. तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये एक अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स है जिसमें सारे टर्म्स सेम है, सारे टर्म कांस्टेंट है, एक जैसे ही दिखाई दे रहे हैं. ओके, सो आई विल से द कॉमन डिफरेंस इज 0. सो कॉमन डिफरेंस D for this arrangement is 0. And what is the first term? First term A is 3. Now can I say this is an arithmetic progression? Yes, because common difference, the difference between any two consecutive terms is a constant. So this is an arithmetic progression. तो डेफिनेटली यह सीक्वेंस एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है. ओके, सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन, दिस इज द जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. अभी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन खत्म नहीं हुआ है, इसमें पढ़ने के लिए बहुत कुछ है. सो फर्स्ट इसे नोट कर लीजिए, देन वी विल टेक सम एग्जांपल्स टू अंडरस्टैंड हाउ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लुक. ओके, बिकॉज जरूरी नहीं है डी हमने अभी देखे, यहाँ पर इंटीजर्स देखे, जैसे कि ये पॉजिटिव टर्म्स देखे, नेचुरल नंबर्स, यहाँ पर 0 देखा. अब हम ऐसी सीक्वेंस को भी देखते हैं जिसमें डी निगेटिव होते हैं, या फिर डी इररेशनल होते हैं, या फिर डी फ्रैक्शन होते हैं. ओके, टू गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. सो फर्स्ट नोट दिस, देन वी विल कंटिन्यू.